Hello everyone, welcome to another video of Sri Academy. I am Sri John and today we are going to discuss the current affairs of 3rd September 2024. So without making any delay, let's start. Let us start the video with a very interesting news. When do we celebrate National Nutrition Week? We have already discussed about National Nutrition Week in our yesterday's session, right? So what is the correct answer? इनमें से कौन से वीक में हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन वीक को सेलिब्रेट करते हैं? Correct answer is 1st to 7th September. Okay, the 1st to 7th September is being celebrated as the National Nutrition Week. So इस बार का जो थीम था, the theme for the National Nutrition Week for 2020-24 is nutritious diet for everyone. I hope it's clear. So let's move to the next quiz. World Coconut Day is observed on. We have already discussed about World Coconut Day, right? In yesterday's session, we discussed about World Coconut Day. So World Coconut Day कब celebrate किया जाता है? 2nd September को, right? The correct answer is option number C, 2nd September. So here is the first news. It's related to economics, okay? The coal production till August in financial year 2024 to 2025 have reached 384 million ton. Okay, if we compare it with the financial year 2023 and 2024, the coal production in India has increased. Okay, increased by 6.48%. जो coal production है इंडिया का वो बढ़ गया है by 6.48% if we compare it with previous year. Okay, so the Ministry of Coal has achieved significant growth in the overall coal production. Okay, जो है मतलब हम लोग का इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. So ये गुड अचीवमेंट है. Okay, it has raised to 384.08 million tons till August 2024. Okay, if we compare it with previous year जैसे कि हम लोगों ने already discuss किया 360.71 million ton था. So there is a increase of 6.48%. Okay, और एक गुड न्यूज है फॉर कोल इंडिया लिमिटेड. ओके, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, द प्रोडक्शन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड रोज टू 290.39 million ton during the period of April to August 2024, making a growth of 3.17 as compared to 281.46 million ton last year. Okay, so कल जैसे कोल का प्रोडक्शन तो कंट्री का तो बढ़ ही रहा है, एज वेल एज द कोल प्रोडक्शन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड is also rising. Okay, rising at a rate of 3.17%. I hope it's clear. So you need to know about the, I always used to say it. Okay, like you need to know about the top five states of India, which are the largest coal producing states. Okay, top five largest coal producing states of India कौन है? So we need to remember the name of the first five coal producing states of the country, that is Jharkhand, Odisha, followed by Chhattisgarh, West Bengal and Madhya Pradesh. ये कोई भी competitive examination में आ सकता है. So you need to know that Jharkhand सबसे ज्यादा coal produce करता है इंडिया में. उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश. ओके, आई होप इट्स क्लियर. पहले भी मैंने ये हम लोगों ने ये डिस्कस किया है बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट. ओके, so here is an expected question for your upcoming examination related to coal. Okay, who is currently the Union Minister of Coal and Mine? जो हम लोगों का यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस कौन है? श्री जी Krishnan Reddy. You need to remember the name. Okay, Sri G. Krishnan Reddy is the Union Minister of Coal and Mine. Okay, I hope it's clear. Let's move to the second good news. Okay, the government received about rupees 2,413 crore as dividend trends from BPCL. Bharat Petroleum Corporation Limited है, right? Recently it came in the news that the Bharat Petroleum Corporation Limited is having losses. Okay, so इसका वजह से गवर्नमेंट उसको बेच देगा, but ऐसा नहीं है. Okay, the government has received about 2,413 crore in dividend from oil PSU BPCL. BPCL से गवर्नमेंट को कितना डिविडेंड मिला है? 2,430 crore. Now BPCL is owned by government, right? Why we can say BPCL is owned by government? Because 52.98% of the shares are owned by government. Okay, so ज्यादा जो शेयर्स है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. So that's why it's a public sector undertaking, right? So ये जो बीपीसीएल है, बीपीसीएल में गवर्नमेंट को 52.98% में गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है. जैसे जैसे शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, फायदा किसको होगा? गवर्नमेंट को होगा. गवर्नमेंट विल गेट डिविडेंड, राइट? सो
as BPCL is BPCL is earning more and more profit, so government have received a dividend of 2,413 crore. Okay, so और एक important news that we need to remember related to Bharat Petroleum Corporation Limited is CIAL, Cochin International Airport. Okay, Cochin International Airport Kerala में है, right? Cochin is a place in Kerala. So Cochin International Airport announces strategic agreement. किसके साथ agreement किया है? CIAL ने BPCL के साथ एक agreement किया है. Agreement to establish the first hydro hydrogen plant, green hydrogen plant in an airport in the world. दुनिया में पहली बार एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एस्टैब्लिश होगा. कहाँ पे होगा? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में. सो बेसिकली CIAL एंड कोचिन एंड BPCL. ओके, CIL एंड BPCL. CIL क्या है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड BPCL they both have an agreement. Okay, and in that agreement together they will establish the first green hydrogen plant. ओके, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप होगा. दुनिया में ऐसा पहली बार होगा. ओके, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. I hope it's clear. So let's move to the next news. Okay, Bharat, this is also related to BPCL. Okay, very important. भारत पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम ने क्या किया? रिसेंटली एक प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया था जिसका नाम है स्पीड. ओके, SPEED. स्पीड. सो रिसेंटली भारत पेट्रोलियम लॉन्च ए न्यू पेट्रोल, ए प्रीमियम पेट्रोल whose name is स्पीड. और इसके लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? नीरज चोपड़ा को. ठीक है, नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. किसके लिए? फॉर प्रीमियम ऑयल नेम स्पीड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय भारत पेट्रोलियम. ओके, सिंपल है. भारत पेट्रोलियम ने एक रिसेंटली एक प्रीमियम ऑयल निकाला था जिसका नाम है स्पीड. और उस उनके लिए उस स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा. ओके, आई होप इट्स क्लियर. So let's move to the next news, that is Paytm aggregators to create negative database to tackle digital fraud. Before we proceed to the news, you need to know the meaning of what is Paytm payment aggregator. Payment aggregator क्या होता है? Basically, I know you all are familiar with online shopping, right? I think you all have done online shopping. So not just online shopping, जब भी हम लोग कोई bill pay करते हैं, fees pay करते हैं, whenever we, let's take the example of online shopping. Okay, suppose whenever we go for online shopping, at last we need to pay, right? So at the end of the process we get a list of payment options, right? So here is the photo, right? This photo can help you to understand. So हम लोग जब भी कुछ खरीदते हैं तो जब हम लोग पेमेंट करने जाते हैं, then we used to get a list. Okay, we used to get a list of the options that are available to us to make the payment, right? हम लोग के पास यूपीआई का ऑप्शन हो सकता है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हो सकता है, ईएमआई का ऑप्शन हो सकता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन हो सकता है, वॉलेट का ऑप्शन हो सकता है. We used to get different kinds of options, right? Debit card, credit card, UPI, wallet, कैश ऑन डिलीवरी. तो वो लोग एक साथ रहते हैं ना, जो भी पेमेंट ऑप्शंस है, राइट? टुगेदर दे यूज्ड टू बी इन अ सिंगल platform, right? So this is your basically payment aggregator. So all the payment options are aggregated in just one place. Okay, so all the different types of पेमेंट ऑप्शन जो आपके लिए अवेलेबल है उनको इकट्ठा जब लाते हैं हम उसको ही बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर. सो बेसिकली ये न्यूज क्या बोल रहा है? पेमेंट एग्रीगेटर्स आर प्लानिंग टू क्रिएट ए नेगेटिव डेटाबेस टू एड्रेस द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ पेमेंट फ्रॉड. सो पेमेंट फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट इज पेमेंट फ्रॉड, राइट? यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. सो स्कैम्स, घोटाला, एवरीथिंग दैट इज बीइंग occurring currently, all this falls under your payment fraud. ओके, सो दे विल क्रिएट ए नेगेटिव डेटाबेस. नेगेटिव डेटाबेस में क्या होगा? नेगेटिव रिकॉर्ड्स रखा जाएगा. जैसे कि एक इंसान ने सपोज कुछ फ्रॉड किया है. ओके, सपोज एक इंसान ने कुछ फ्रॉड किया है तो वो डेटाबेस में उसका उसका नाम रहेगा. ओके, along with his name, his details, other details, his card details and all. So this will help to inform both the customers as well as the merchants. Okay, ताकि वो customer suppose he had some issues with his card, okay, before, या किसी ने उसका कार्ड को हैक वगैरह किया था. So he will, with the help of this database, okay, you will know that oh पहले पहले भी ये सब हुआ था तो उसका वजह से फ्यूचर में ताकि ऐसा ना हो. So this database is
basically going to help both the customers as well as the merchant. Okay, so the payment aggregator, जो आपको मैंने बता ही दिया है क्या है पेमेंट एग्रीगेटर, वो लोग क्या करने जा रहे हैं, नेगेटिव डेटाबेस बनाएंगे टू टैकल डिजिटल फ्रॉड, ताकि डिजिटल फ्रॉड जो बढ़ रहा है उसको कैसे टैकल डाउन करके कम कर सके। ओके, उस इसी वजह से वो लोग क्या करेंगे, एक नेगेटिव डेटाबेस लाएंगे। सो द पेमेंट एग्रीगेटर्स दे विल bring a negative database. I hope it's clear. So let's move to the next news. Okay, Philips appoints Bharat Sasha as new managing director for India. Okay, it's not a very big, मतलब कोई बड़ा ऐसा न्यूज नहीं है इसको। यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज योर द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर Philips. Okay, managing director of Philips for India, and it's Bharat Sassa. Okay, I hope you got the point. Okay, the Bharat Sassa has been appointed as the managing director of for Philips in India. So other important things that could be asked in your upcoming examination are Philips का headquarter कहाँ पे है? Philips is basically a Netherlands based company. Okay, that's based company है, Netherlands का है company, इसका headquarter कहाँ पे है? Amsterdam पे है, which is the capital of Netherlands. CEO कौन है? Currently CEO है Roy Jacobs. Okay, Roy Jacobs is the CEO of Philips, current CEO of Philips. You need to remember all these things. So let's move to the next news related to Meso. I know you all have heard about Meso. Okay, Meso is very popular, right? सबने कुछ ना कुछ खरीदा ही होगा। So Meso जिस प्राइस पे सामान ऑफर करता है, it's like very interesting. They used to offer products at a very cheap price. और उसकी वजह से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी, ओके, फॉर द प्राइस, बट anyways, the e-commerce major Meso appoints Mohit Rajni as chief product officer. So Meso ने किसको अपॉइंट किया है? chief product officer chief product officer मोहित रजनी को Meso ने अपॉइंट किया है, ओके, एस सी पी ओ। यू नीड टू रिमेंबर द नेम। And Rajni has previously been associated with Meta, Google, and Tata. So I hope it's clear, right? Other things that you need to remember about Meso is कब Meso formed हुआ था? Founded in the year 2015. Okay, its headquarter is in Bangalore. Okay, so who were the founders? You need to remember this the two names. Okay, Sanjeev Barnwal and Vidit Atre. Okay, you need to remember these names: Vidit Atre and Sanjeev Berwal. Okay, these are the people who founded the Meso in the year 2015, whose headquarter is in Bangalore. I hope it's clear. ठीक है, बेंगलोर में है हेडक्वार्टर, 2015 में फाउंड किया गया था। So something related to your online uh, platforms. Okay, something related to your e-commerce platforms. When was ONDC launched? ONGC नहीं, okay, not ONGC, it's ONDC. When was ONDC launched? The correct answer is 2022. Let's see what is ONDC. ONDC stands for Online Network for Digital Commerce. Very important. It could be asked in your upcoming examinations. Okay, ONDC का full form क्या है? Online Network for Digital Commerce. Okay, it was introduced by the government in the year 2022. Okay, basically ये क्यों setup किया गया था? Let me make it simple for you to understand. Basically to promote the e-commerce platforms. Okay, जिसका ताकि more and more e-commerce platform आ सके, to attract more and more e-commerce platform, ये ONDC launch किया गया था। इससे क्या होगा? It allows buyers to shop anywhere in the world while sellers can reach a wider audience with their products. So इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा the sellers who are involved with e-commerce platforms, they will get a option to increase, to get more and more wider audience. Okay, to मतलब उनको एक मौका देगा गवर्नमेंट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल इंक्रीज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करके। ओके, तो wider, to reach a wider range of audience. Okay, this was set up, and so that it becomes easier mm, for the people who are related with e-commerce business. Okay, and it is owned by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. You need to remember, first thing you need to remember, कब आया था ये? 2022 को। इसका फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओके, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इट इज
founded by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade. Okay, I hope it's clear. So let's move to the next news. Okay, simple news. Cabinet approved a 309 kilometer long new line project. Okay, so basically एक new railway line connectivity होगा between the two commercial hubs. किस किस के बीच में होगा? मुंबई एंड इंदौर के बीच एक नया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है. That is 306 kilometer long. Okay, so the cabinet committee on economic affairs CCEA headed by the Prime Minister Narendra Modi, has approved a new railway line project under the Ministry of Railway with a total cost of 18,036 crore. So basically, ये इसका जो cost रहेगा, right? Total expenditure of this project, this new railway line project, that is going to be 309 kilometer long, connecting your Indore and Manmat. Okay, this project will cost around 18,036 crore. Okay, यही है आपको रिमेम्बर करने की मेन थिंग है. ये कितना लॉन्ग होगा? इट विल बी अराउंड 309 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट. ओके, और ये किस किस जगह को कनेक्ट करेगा? ये इंदौर एंड मनमत को कनेक्ट करेगा. ओके, इंदौर और मनमत को कनेक्ट करेगा और इसका टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा इस प्रोजेक्ट का? इट्स अराउंड 18,036 करोड़. ओके, द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, आई विल रिपीट इट वंस अगेन. How long? 309 kilometer long. Okay, total expenditure is around 18,036 crore and it will be connecting Indore and Manmat. Manmat कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. Basically, it is going to connect Mumbai and Indore. ओके, आई होप इट्स क्लियर. इससे क्या होगा? आफ्टर दिस रेलवे लाइन ये रेलवे प्रोजेक्ट है, इससे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, राइट? सो मेनी पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट जॉब्स. एंड इससे क्या भी होता है? कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो इट विल एनहेंस द बिजनेसेस, राइट? एंड सर मतलब कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से धीरे धीरे देश का भी इम्प्रूवमेंट, वो जगह धीरे धीरे डेवलप होने लगता है. इसका वजह से द कंट्री ऑल्सो स्टार्ट्स टू गेट डेवलप. I hope it's clear. So let's move to the next. Okay, expected question related to that news. Okay, this could be asked in your upcoming examination. Who is the Union Minister of Railway of India? Correct answer is Ashwini Vaishnaw. You need to remember their name because he is not the he is not just the Minister of Railway, but he is also the Minister of Information and Broadcasting. So दो मिनिस्ट्री की मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव. So you need to remember the name. Very important. I'll repeat once again. नाम याद रखो. You need to remember the name Ashwini Vaishnaw. He is the Minister of Railway as well as he is the Minister of Information and Broadcasting. I hope it's clear. So let's move to the next. Okay, one of the most important news. Okay, Cabinet approved one more semiconductor unit under the Indian Semiconductor Mission ISM. Very important. Semiconductor क्या होता है? We all know, right? Semiconductors are very important. The every electronic product that we use, okay, we need semiconductors. एक घड़ी, एक स्मार्ट वॉच, starting from your smart watch, normal watch, to your phone, to jet fighters, fighter planes, rocket, laptop, computer, everything needs semiconductor. Okay, सभी चीज हम लोग जो भी important चीज सब तरफ देख सकते हैं उसमें semiconductor चाहिए. Even your car also needs semiconductor. सभी चीजों को semiconductor चाहिए. That's so important, right? So what India needs to import the semiconductors from other countries. क्योंकि इंडिया में अभी हम लोग बना नहीं, मतलब बनाना शुरू किया है, but we are not, we have not attained that stage that we are not totally not dependent on other countries, right? So ताकि देश में और भी सेमीकंडक्टर्स बना सके हम लोग, उसका वजह से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM को लॉन्च किया गया था. ओके, सो द न्यूज इज दैट द कैबिनेट हैज अप्रूव वन मोर सेमीकंडक्टर यूनिट. और एक सेमीकंडक्टर यूनिट को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. ओके, with the objective to develop a vibrant semiconductor ecosystem, the union cabinet headed by Prime Minister Narendra Modi approved the proposal of Keyence Semicon Private Limited to set up the semiconductor in Sanand, Gujarat. So क्या हुआ है कि already under the India Semiconductor Mission we have set up 4 semiconductors. Okay, semiconductor unit अलग अलग जगह पे. One is in Assam. Okay, I think 2 is in Gujarat. Okay, so ये 5th नंबर का जो प्लान है वो अभी सेटअप किया जाएगा. कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? गुजरात
Sanand Pe. Okay, you need to remember the name Gujarat Sanand Pe fifth semiconductor unit is going to be set up. Okay, it has been approved by the government. ओके किसको अप्रूव किसका प्रपोजल था ये कौन सा कंपनी इसमें एस्टेब्लिश करेगा इसमें केयन सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड ओके यू नीड टू रिमेंबर व्हाट वर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर केयन सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट थिंग सेकंड कहाँ पे होगा गुजरात पे सनंद पे ओके और इसमें टोटल कॉस्ट कितना लगेगा इसका जो प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है दैट इज अराउंड 3300 करोड़ एंड आफ्टर दिस प्लान हैज बीन सक्सेसफुली सेटअप तो एक बार ये प्लान जब भी हो जाए सेटअप उसके बाद इट विल बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 60 लैक्स चिप पर डे एक दिन में 60 लैक्स सेमीकंडक्टर चिप ये बना सकेगा सो द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो दिस आई रिपीट वंस अगेन ओके इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन okay why it was launched we will learn that okay in our next slide but before that the things you need to remember is Kaynes Semiconductor Private Limited okay the government has approved the Kaynes Semiconductor Private Limited to set up the semiconductor unit kahan pe where at Sanand Gujarat okay Kaynes Semiconductor Private Limited first thing you need to remember second Sanand Gujarat second thing you need to remember third total budget okay total costing of this project will be around 3300 crores okay it will be the total investment to set up the this plan okay ये कौन से नंबर का प्लान है इट्स द फिफ्थ यूनिट ओके इट्स द फिफ्थ यूनिट सनन गुजरात में 3300 crores will be the total investment and after completion okay it will be able to produce 60 lakh semiconductors per day okay I hope it's clear okay so let's see what is the India semiconductor mission what is this ISM okay ISM was launched in the year 2021 ओके दिसंबर को लॉन्च किया गया था 2021 को ओके टोटल बजट कितना था आईएसएम का 76,000 करोड़ ओके आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मिशन ऑफ आईएसएम आईएसएम का मिशन यही है कि हम लोग इंडिया में सेमीकंडक्टर्स डेवलप कर पाए ओके सो दैट वी कैन डेवलप सेमीकंडक्टर्स इन आवर ओन कंट्री ओके रेदर देन डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स एंड इंपोर्टिंग द सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज okay the mission of Indian Semiconductor Mission is to make India capable of producing semiconductors in India, okay, rather than depending on other countries. So in June 2023, the cabinet has approved the first proposal of setting up a semiconductor unit in Sanand, Gujarat. So first unit था वो भी सनन गुजरात में established हुआ और जो fifth unit है जिसका हम लोगों ने already discuss किया okay the first unit the first unit was set up at Sanand Gujarat okay and the fifth unit that we recently just now we discussed okay that is also going to be set up at Gujarat by King's Semicon Private Limited okay एक असम में टाटा ने सेटअप किया है एक सेमीकंडक्टर एंड okay so your homework will be is to you know is to find out that where these five semiconductor units are being set up at which part of India okay one you know the first one is set up at Sanand Gujarat the fifth one is set up at Sanand Gujarat one has been set up in Assam okay by Tata you need to find the other remaining two semiconductor units okay where they have been set up please do comment the answer in the comment section okay so here is the expected question not expected question this question in fact it came in the SBI SBI mains okay it came in the SBI mains examination so which country is the biggest producer of semiconductor इनमें से कौन सा देश में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है and the correct answer is the Taiwan. Okay, Taiwan produces the maximum number of semiconductors. उसके बाद followed by South Korea, then Japan, then United States and China. Okay, Taiwan, South Korea, Japan, United States and China. So the country that produce the maximum number of semiconductors is Taiwan. Taiwan में सबसे ज़्यादा semiconductors का manufacturing होता है. Okay, so today is 3rd September and 3rd September is also celebrated as International Skyscraper Day. So happy International Skyscraper Day to what I hope you know the meaning of skyscraper, right? The big tall buildings. Okay, so a separate day is allocated okay just for the skyscrapers and it is 3rd September and 3rd September we celebrate it as International Skyscraper Day. So 3rd September होता है हम लोग International Skyscraper Day मनाते हैं. Okay, I hope it's clear. Okay, that was all for today. I hope you enjoyed the session.
Okay, will again meet tomorrow. So please don't forget to follow me on Instagram and Telegram. Okay, I'll upload the PDF every day on Telegram, and you will also get all the important news updates in Telegram. So please don't forget to join the Telegram channel. Okay, you can also follow me on Instagram when I'll slowly upload quiz. Okay, quiz in my stories. So that was all for today. I hope you really enjoyed the session. And if you like the video, I mean, if you found this video very helpful, please don't forget to like it and share it with your friends. Okay, I need your like, your views, so that I get motivated every day to bring such contents every day, right? So I hope you'll like my video, you will share it with your friends, and also you will subscribe the channel. Please don't forget to subscribe the video. That's all. Thank you, and see you tomorrow. Bye bye.